So, as in previous part, we discussed about nucleus. Then after, in next session, in this session, we are dealing with completely about nucleus, about NMR. So, let me just try to share with you some of the nuclear magnetic resonance parameters. That is, with nucleus means the word nuclear magnetic resonance. Now we are pretty clear with the nuclear word. Now we will be turning to the magnetic. See, whenever you are discussing or whenever you are explaining about the magnetic, whenever you're, wait a minute. So, whenever you are discussing or whenever you are telling about the magnetic resonance, so see, whenever you heard the word magnet at that time, you may the word or the thing may came in your mind, that is magnetic means something like magnet is there, something like magnet should be there, or it came into your mind. So, whenever this magnet word is there at that time, magnet means if you have the and if you have an atom, then whatever this atom is there, this atom is having an electron, and whatever that electrons are there, that electrons are revolving towards itself, that electrons are revolving towards itself, and whatever these electrons are revolving towards itself and towards the nucleus, at that time they have their specific spin, now question arises about the nucleus, when you have nucleus at that time, whatever this nucleus is there, this nucleus is having number of protons and the number of neutrons. Now whenever this proton is there at that time, this proton is explaining, or this proton tells you info regarding its charge. So whatever the charge is there on your proton, it is plus, it is what, plus. And when you are discussing about the neutrons, at that time, whatever neutrons are there, these neutrons are neutral in nature, and whatever these neutrons are there, these neutrons became neutral, and whatever these protons are there, these protons became positive. And see, whenever these protons are there, these protons can be, or can be made up of the parts, or the thing which you may discuss in your nuclear chemistry. I don't know you guys are well known with the thing or not, but I would like to tell you the thing. See, हे जे काही मॅग्नेटिक रेझोनन्स आहे, मॅग्नेटिक रेझोनन्स होण्यासाठी किंवा NMR जो क्रायटेरिया आहे हा समजण्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात अगोदर हे जे काही प्रोटॉन्स आहेत, हे प्रोटॉन्स, दीज आर हाउ मच द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एकाध एटम में, एकाध न्यूक्लियस में कितने होते हैं, वो निकालने आना बहुत जरूरी है. अगर से नहीं भी आते होंगे तो हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले, अब जब कभी भी हम ये बात आती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, जब कभी भी बात आती है हमारे न्यूक्लियस की, at that time when that proton and when that neutrons are there, at that time, as in previous semester we discussed about neutron diffraction, and therever we taught about whatever that neutrons are there, though they are neutral in nature, they have their specific magnetic moment value. And why it is so, that you know very well, each and everyone, because you have learned already all these things in our neutron diffraction pattern. Now I'm coming to the point. And what is that? That is related with the proton and neutron. See, whenever you have these your protons and whenever you have these your neutrons, see, cause this is as proton, cause this is as neutron. Now single proton and single neutron is made up of, single proton and the single neutron is made up of the three parameters, and single neutron is made up of three parameters which can be named as quarks. काय म्हणते मी? Quarks. Okay, so whatever these quarks are there, these quarks, what they express, or what that quarks are, see, there in nuclear chemistry you can learn about these quarks. See,
अब तक हमने देखा था whatever an atom is there, that one is the smallest and the indivisible part. But जो कुछ भी ये हमारा एटम होता है, ये एटम में भी और सब पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट इनके साथ ऐसे न्यूमरस पार्टिकल्स होते हैं, लाइक पॉजिट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक नेगेट्रॉन एंड मेनी मोर पार्टिकल्स, मेसॉन, पाइमेसॉन, ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स है जो कि हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के भी मतलब इनके भी सिवा होते हैं। तो अब बात आती है, जैसे कि मैं डिस्कस कर रही थी क्वार्ट्ज के बारे में। सी आपको ये जब आप न्यूक्लियर पढ़ोगे तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट हियर मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देती हूँ ये क्या होता है। जब कभी भी एक प्रोटॉन बनता है तो वो प्रोटॉन बनता है 3 कॉर्क से, और जब कभी भी न्यूट्रॉन बनता है तो वो भी बनता है 3 कॉर्क से। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम व्हाई दीज थिंग्स यू आर टेलिंग अस, is that important for us? Actually guys, this is not included in your NMR and this is not at all important. आप बोल सकते हो या फिर नहीं भी बोल सकते हो, बट आप ये बात पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर से इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको अगर वो लोग पूछे क्वेश्चन कि व्हाट आर द बेसिक एंटिटीज ऑफ योर element, or you can say as an atom, then please do not mention only 3 particles can be there in your atom, because except these 3 particles like proton, neutron and electron, there is the presence of many more number of particles or many more number of things in our atom, and that can be like positron, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह और भी पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, मेसॉन, देन ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है। अभी मुझे वो सब कुछ बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि हम डील कर रहे हैं NMR से। सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अब ये बात आती है क्योंकि मुझे आपके क्लास के कुछ लोगों ने बोला था कि आप लोगों को बेसिक्स चाहिए बट बहुत फास्ट में, तो इस जगह में ये कॉर्क्स का डिस्कशन रुका रही हूँ। अगर से आप लोग चाहते हो तो हम किसी अदर क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट इज दैट कॉर्क एंड व्हाई द प्रोटॉन इज हैविंग इट्स अ +1 चार्ज एंड व्हाई न्यूट्रॉन इज हैविंग +0 चार्ज, या फिर हम उस पर कुछ भी चार्ज नहीं है बोलते, बट neutrons and protons are there in your nucleus, and whatever the total charge is there, that total charge on your proton is +1 and on your neutron it is 0. How it is so, that we can discuss in it's a form, or I'll tell you quickly here. See, ये जो कुछ भी कॉक्स होते हैं, ये कॉक्स होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं, जिनको कि हम बोल सकते हैं अप, डाउन, टॉप, बॉटम, sharp, and one more part is there, or one more type of cock is there, with which we are not dealing here. With which we are dealing with here is up and down. These are the 2 types of cocks which are present in our proton, and which are present in our neutron. So अब देखिए यहाँ पर जब कभी भी हम कॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, एट दैट टाइम दो अप यहाँ, दो डाउन यहाँ पर इन प्रोटॉन एंड 2 अप यहाँ पर इन योर न्यूट्रॉन। मतलब क्या कि अप और डाउन ये कौन है? ये कॉक्स के टाइप है। ये कॉक्स के टाइप है। कॉक्स कितने प्रकार के होता है बोला मैंने? 6 प्रकार के। उनमें से कितने प्रकार के कॉक्स आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होते? 3 प्रकार के प्रोटॉन में और 3 प्रकार के न्यूट्रॉन में। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो कि ये सारे के सारे प्रकार के एक एक, या फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर मतलब आपके प्रोटॉन में 3 और आपके न्यूट्रॉन में 3 होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कराओ, क्योंकि थिंक इज प्रोटॉन में कुछ अप कॉर्क होते हैं और कुछ डाउन कॉर्क होते हैं, सेम एज दैट ऑफ इन न्यूट्रॉन ऑल्सो। कुछ अप प्रकार के कॉर्क होते हैं और कुछ डाउन प्रकार के कॉर्क होते हैं। आप बोलोगे मैम व्हाट इज दिस, हमारा सिर कंप्लीटली घूम रहा है, आप ये क्या पढ़ा रहे हो? गाइस, this is the actual NMR, and if you go into the interviews at that time, they will not be asking you what is the
what is the long form of NMR? Tell us what is the long form of NQR? What is mean by PMR? वो लोग आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू में. अगर से ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं दो पाओगे तो आपको कोई भी मतलब मैं यहाँ की मतलब ऐसे सिंपल से जॉब नहीं बोल रही हूँ, सिंपल से इंटरव्यूज नहीं बोल रही हूँ. आप जब अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू देने जाओगे, एक आध कंपनी में या फिर एक आध इंडस्ट्री में या फिर एक आध इंस्टीट्यूट में, लाइक आइजर, आईआईटी, एनसीएल, ऐसे इंटरव्यूज में अगर से आप लोग उनको बोलोगे कि हमने एनएमआर पे प्रिपरेशन किया है एंड यू कैन आस्क अस ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, then they guys may ask you these questions and you should be able to answerable, and this is about the basic. And now you guys please tell me, is that important or not? Yes guys, I'm expecting from you. Yes, ma'am. है important या नहीं? Now, after this, our proton, neutron, quarks, and what type of quarks are there? Then thereafter, ये जो quarks होते हैं ना, ये हमारे प्रोटॉन पर कितना चार्ज आता है, ये हमारे न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज आता है. अब ये अगर से हम डिस्कस करेंगे तो प्रोटॉन पे आता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे आता है हमारे कितना चार्ज, जीरो चार्ज, क्योंकि वो कैलकुलेटेड होता है. और अगर से आप लोग चाहो तो मैं उस पर भी एक आध वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगी या फिर किसी दूसरे क्लास में आप लोगों को वो मैं प्रूव कर दूंगी. ओके, बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स एनीथिंग, आई मस्ट हैव टू टेल यू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एम एंड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ आर. मीन्स एन का लॉन्ग फॉर्म मतलब न्यूक्लियर, एंड उसके लिए हमने 1 से 1.5 क्लास पढ़ा है. और उसके बाद, एंड दिस इज द वे ऑफ माई टीचिंग. देन आफ्टर एम एंड आर का जो कुछ भी डिस्कशन है, नाउ एनएमआर का जो कुछ भी ये डिस्कशन होता है, उसके लिए अब हमें थोड़ा सा फिजिक्स में जाना होगा बेटा. किस में जाना होगा? थोड़ा सा. फिर देखिए मेरे पास सारे स्लाइड्स अवेलेबल है, बट आई एम नॉट यूजिंग दोज स्लाइड्स बिकॉज आई मस्ट हैव टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स फर्स्टली, एंड इफ यू गाइज आर क्लियर विद दिस थिंग्स, देन मैं सारे स्लाइड्स का यूज करके आपको फास्टली एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, सो लेट मी जस्ट टेक अ व्हाइट बोर्ड अगेन टू एक्सप्लेन यू what is mean by the magnetic word और what is mean by magnetic resonance. ये दोनों words के बारे में अभी हम थोड़ा सा फास्टली डिस्कस करेंगे. तो वट एवर दिस योर मैग्नेटिक वर्ड इज दिया एट दैट टाइम, जैसे कि हमने क्लास शुरू करते ही 5 सेकंड में मैंने बोला था आपको कि मैग्नेटिक बोले तो मैग्नेटिक वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में चीजें थिंक होना शुरू हो जाते कि इज इट अबाउट मैग्नेट, एंड व्हाट इज मीन बाय मैग्नेट. मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड. यस, यू गाइज आर करेक्ट. जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है वो करेक्ट है. अब देखिए थोड़ा सा फिजिकल अप्रोच में, जैसे मैंने बोला था फिजिकल अप्रोच या फिर आप क्वांटम के अप्रोच में बोल सकते हो इसको. तो देखिए जब कभी भी मतलब फिजिक्स में जो कुछ भी क्वांटम होता है वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ क्वांटम में बोल रही हूँ. तो अब देखिए ये जो कुछ भी मैग्नेट होता है, मैग्नेट कभी भी जब हम, और स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं बार मैग्नेट ले रही हूँ. कौन सा मैग्नेट ले रही हूँ बेटा? बार मैग्नेट. बार मैग्नेट मतलब वो कैसा होता है? बार के जैसे. बार मतलब सोप बार बोलते हो आप. सोप बार मतलब आपली साबण. सोप, SOAP सोप. सोप म्हणजे साबण साधी, मग ती तुमची कपड्याची असू द्या नाहीतर तुमची बाथ सोप असू द्या. ओके, सो वाय आय एम टेलिंग यू, बिकॉज इफ यू आर कन्सिडरिंग दॅट मॅग्नेट ॲज अ बार, मग तुम्ही इथं सोप घेताय मग त्याच्यात मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस होतं का? नो, आय एम टेलिंग यू जस्ट बार मॅग्नेट. बार मॅग्नेट म्हणजे ते एखाद्या वडीसारखं असतं असं मला तुम्हाला सांगायचंय. एक सपाट असतं. देन आफ्टर पॉइंट केम and that is as bar magnet, and bar magnet is having north pole and the south pole. Each and every magnet have its two ends and it is universal. That is nothing but the two poles are there, and whatever that two poles are there, they are north and the south. Whenever you have this north and south pole, then after this north pole and this south pole they can have their magnetism. They can have guys, इथे दिसत नाहीये तर मी थोडस खालती काढते. हे म्हणजे तुम्हाला दिसावं.
This magnet can have two ends, that is one can call as north and one can call as south, and this magnet can have their magnetic field और magnetic जो कुछ भी इंडक्शन होता है मैग्नेटिज्म का वो होता है लाइक दिस यू कैन रिप्रेजेंट इट, मतलब उनमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो गए अभी। ओके, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, अब ये जो मैग्नेट है, लेट मी जस्ट शो यू, यस, ऐसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें। और एक मैग्नेट अगर आपने लिया तो अब यहाँ पर समझ लीजिए ये अगर नॉर्थ है और ये अगर से साउथ पोल है, आप देखो ये जो कुछ भी हमारा पोल है नॉर्थ एंड साउथ, किसका बार मैग्नेट का, नाउ देर इज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म इन इट सेल्फ दैट मैग्नेट। बट अब यहाँ पर जब बात आती है एनएमआर के बारे में, तो एनएमआर में हम कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, एंड वॉट एवर दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज दिया, दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is wait a minute, is there any, no, wait, I want to take that magnet, but I couldn't. So whatever this bar magnet is there na, this bar magnet is having its magnetic field, itself magnetic field, म्हणजे त्याची magnetic field प्रोड्यूस होते। मग तुम्ही आता म्हणाल मॅम क्वांटम फिजिक्स वगैरे बोललं तुम्ही, पण हे केमिस्ट्रीत देखील होतं। हो, आता सांगते तुम्हाला जे काही क्वांटम फिजिक्स बद्दल वगैरे बोलते। सो कन्सिडर वन ऑफ वायर, एक वायर घेताय तुम्ही आणि ते जे काही वायर आहे त्या तुम्ही कॉइल करताय, त्या वायरला तुम्ही काय करताय, सपोज फॉर एक्झाम्पल कॉइल करताय। मग आता ही जी काही वायर आहे ऍट दॅट टाइम करंट जे काही फ्लो होतं, फॉर नीट लक्ष देऊन ऐका मी, आणि हे समजलं नाही तरी चालेल हा, कारण हे कम्प्लिटली फिजिक्सशी रिलेटेड आहे, फक्त तुमच्या डोक्यावरनं जाऊ द्या ह्या गोष्टी कारण इम्पॉर्टंट आहेत। तर कुछ भी हमारा वायर है उस वायर का एक एंड प्लस है और एक माइनस देते हैं। अब आप लोगों को जैसे कि पता ही है, ये जो कुछ भी लूप, इसको हम लूप बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, हम लूप बोल सकते हैं। एंड ये जो कुछ भी लूप है ना, ये लूप हमें info देता है अबाउट करंट, एंड वॉट एवर दिस करंट इज देयर, दिस करंट इज flowing from positive to negative, and this is nothing but the conventional method of current. And now actual the real current which is flowing, आता तुम्ही कन्फ्युज होऊ नका, मला माहिती आहे तुमच्या डोक्यात सुरू झाले मॅम करंट तर निगेटिव्ह कडनं पॉझिटिव्ह कडे जातं, हे काय सांगताय तुम्ही। येस बेटा, बट आय टोल्ड यू दी current, I told you about the current production, but I didn't tell you about the electricity. And now whenever you are dealing with the electrons at that time, obviously कसलाही डाऊट ठेवू नका डोक्यामध्ये, कारण की वेन एव्हर यू आर डिलिंग विथ द इलेक्ट्रॉन्स ऍट दॅट टाइम, इलेक्ट्रॉन्स आर मुव्हिंग फ्रॉम निगेटिव्ह एंड टू द पॉझिटिव्ह एंड, आणि यातनं जे प्रोड्यूस होतं ऍक्च्युली तुमच्या वायरमध्ये, त्याला आपण एका एंड कडनं वायरच्या दुसऱ्या एंड कडे, म्हणजे जसंही आपण स्विच ऑन करतो अँड ऑफ करतो, whenever you switch on and switch off at that time electricity is produced. Now you guys may ask me, ma'am, why are you telling these all bullshit things, because this is important for you. These are not the bullshit things, first of all, these are the very important things, because once here is the production of electric current at that time, everybody knows very well from you class, and the every student of science must have to know one thing, whenever there is a production of magnetic electric field at that time, simultaneously त्याला perpendicular असा तुमचा magnetic field produce होत असते, and vice versa thing is there. So whenever you have this magnetic field at that time, हे कशासाठी सांगितलं, हे सगळं काही बेसिक आहे तुमच्या magnetic fieldचं. So once you got clear this magnetism, what does it mean, ये जब अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और ये जो
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। आपने फिजिक्स में पढ़ा था, देखो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसके बारे में हमें इन्फो देता है? राइट हैंड थंब रूल इज गिविंग अस एन इन्फो रिगार्डिंग, हा असा घाणेरडा माझा हात आहे आणि राईट, आणि हा राईट हँड आहे समजा, तर राईट hand rule gives information regarding where from your current is म्हणजे producing, and whenever this rule is there or this right hand rule explains us कैसे आपकी मैग्नेटिक कैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, कैसे आपकी क्या बोलते हैं उसको, वेट अ मिनट, हाँ उसको एक प्रॉपर वर्ड बोलती हूँ, हाँ ओरिएंटेशन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आपके, कैसे स्पिनिंग होगा, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्या एंगुलर मोमेंटम वैल्यू होगी, ये सब कुछ के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस राइट हैंड थंब रूल से। अब ये जो कुछ भी राइट हैंड थंब रूल है, ये राइट हैंड थंब रूल, अब हमें ज्यादा फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं, इतना जो फिजिक्स आप लोगों ने सुन लिया है ये वो अगर से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें एज सच पेपर में कुछ भी लिखना नहीं है on this slide. Okay, guys? Yes, ma'am. Okay. So, let me continue with the next part. अब देखिए जब कभी भी आपके wait a minute, let me just share the PPTs of your NMR. दिसतायत का PPTs? No, ma'am. आता दिसेल, एक मिनिट, दिसतंय? Yes, ma'am. ओके. अरे रे, थांबा. Wait a minute, I don't want this slide. I want another slide. Mhm. Yes. Mhm. See, it should be from this part. This is not. Yeah, it is right here. Let me just check it. Yes. हाँ, तर आता दिसती slide? Hello? I think on your screen slide is there. Is it? Principles of NMR. हाँ, okay. Okay, केमात बनालास. So, principles of NMR. In the principles of NMR, see, as I told you, अब देखिए जो कुछ भी न्यूक्लियस मैंने लिया था वो न्यूक्लियस, लेट मी जस्ट एनो, ओ ओ अरे सगळं उलट पुलट करून ठेवलं मी, एक मिनिट थांबा, हात एकीकडे लावायचं तर दुसरीकडे गेला. हा, येस, नाउ दॅट्स फाईन. whenever you have your nucleus at that time, मला एक गोष्ट सांगा, मी आता इथे जे स्क्रीनवर लिहिते ते दिसतंय का? जेव्हा केव्हाही तुमचा न्यूक्लियस असतो, तो न्यूक्लियस जेव्हा केव्हाही तुमचा न्यूक्लियस आहे, तो न्यूक्लियस जेव्हा केव्हाही असतो, तो न्यूक्लियस हा त्याचा एका स्पेसिफिक स्पिननी तो फिरत असतो. दॅट माइट बी क्लॉकवाईज, दॅट माइट बी अँटी क्लॉकवाईज. येस ऑर नो? Its answer is yes. Okay, Yes, ma'am. so you have this nucleus at that time. ये जो कुछ भी आपकी एनएमआर की थियरी है या फिर एनएमआर का जो कुछ भी प्रिंसिपल है, आई मीन टू से ये जो कुछ भी मैग्नेटिज्म है, अब ये मैग्नेटिज्म जब कभी भी आपका ये मैग्नेट होगा, ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने के लिए आपके पास में एक मैग्नेट है, और वो मैग्नेट मतलब कि आपका एक मैग्नेट है, और मैग्नेट का समझ लीजिए ये साउथ, नॉर्थ बोलो साउथ बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो ये नॉर्थ है फॉर एग्जांपल, ये साउथ है,
था, एंड इसमें आपने आपका एक बार मैग्नेट रखा है। अब आप लोग मुझे क्या बोल सकते, क्या आप लोग मुझे बोल सकते विच वन इज द नॉर्थ पोल एंड विच वन इज द साउथ पोल? यस, because this is nothing but the law of attraction, or law of हो attractionच म्हणू आपण. दोन in the presence of external magnetic field, external magnetic नाही म्हणायचं मला, दोन वेगवेगळ्या पोलमध्ये तुम्ही ठेवलाय तुमचा बार मॅग्नेट. काय रे, काहीच येत नाही का? Listen carefully. So whatever this magnet is there, this magnet south pole will be here and north pole will be here, because opposite attracts and like repels. ओके, लाईक रिपेल्स म्हणजे सारखे सारखे जे पोल्स असतात, नॉर्थ विल रिपेल नॉर्थ अँड साऊथ विल रिपेल साऊथ, अँड दॅट इज व्हाय युअर साऊथ पोल विल बी हियर अँड युअर नॉर्थ पोल विल बी here. And likewise this, when you have this criteria at that time for this purpose, जो कुछ भी अब मैग्नेट होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये जो कुछ भी बार मैग्नेट है आपका, ये बार मैग्नेट जब कभी भी आपके आपके एक्सटर्नल, ये हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बट आई वुड लाइक टू टेल यू क्यों मैंने ये पहले बोला, और ये जो मैं बात अब बोलने वाली हूँ ये क्यों मैं अब बोल रही हूँ, इसका रीजन देती हूँ. जब कभी भी आपकी ये न्यूक्लियस घूमते रहो रे, घूम रहो, मतलब कि जब वो मोशन में होते हैं, जब वो स्पिन पचेस करते हैं, जब जितनी ज्यादा वो मोशन में होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्पिन होगी, उतनी ज्यादा उस पर उसका मैग्नेटिक उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू होगी. एंड जब कभी भी आप क्लियर अप हो जाओ ये सारे थिंग्स पर से, तब आपको उसकी स्पिन दे सकते हो. नाउ अगर से आपका कुछ यहाँ पर आप लोगों को राइट हैंड में दिख रहा है, जिसको कि मैं बॉक्स में बता रही हूँ, इन द absence of any external magnetic field, आपके न्यूक्लियसेस कहीं भी कैसे भी घूम सकते हैं. I mean to say they are in their spinning motion, in a random spinning motion. But whereas if you are applying the magnetic field, then all those can be completely, all those nucleuses or all those जे काही तुमचे न्यूक्लियस म्हणा किंवा मग त्या न्यूक्लियस मधले न्यूक्लियसच म्हणा, चला काही म्हणू नका, बाकीचं कन्फ्युज व्हाल अजून तुम्ही. इन द प्रेझन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, they will be trying to align themselves, they will be trying to align themselves in that external magnetic field, and whatever that external magnetic field is there, that can be, मतलब अलाइन मतलब क्या, अलाइन का मतलब होता है वो खुद की उनकी अरेंजमेंट. अलाइन, ये वर्ड आप लोग बहुत बार, अब मैंने जैसे कि आप लोगों को सीएन बनवेल प्रोवाइड किया है, अब उस सीएन बनवेल में आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो तो आप लोग पहले ही दिन चक्कर आके मतलब बुक बंद कर दोगे, क्योंकि बुक में ये सारे जो मैंने 2-3 पार्ट्स आपको पढ़ाए हैं, ये कुछ भी ऐसा कंप्लीटली दिया नहीं है. और इसी चीज के लिए मैंने ये सब कुछ बैकग्राउंड क्रिएट किया है, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाओ. और अब एक्चुअल एनएमआर स्टार्ट हो चुका है. हाँ, अब से आपको सारी चीजें पता होनी और क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो तो फिर अब आती हूँ मैं मेरे पॉइंट पे, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बोला था, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in the presence of काय beta, external magnetic field, your nucleuses will try to align themselves, that might be with the external magnetic field or opposite to the external magnetic field. With the magnetic field जर त्यांनी align केलं, if they align themselves with the magnetic field, or if they are aligning themselves opposite to the magnetic field, मतलब क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ रही है क्या मेरी बात? जो कुछ भी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, यू कैन से और यू कैन कॉल दैट इज एज B0, एंड ये जो कुछ भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो अगर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट विथ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड विच कैन हैव देयर, वो मैं आपको एक स्लाइड की हेल्प से बताती हूँ वो कैसे अलाइन होते हैं. एक मिनट, हाँ, let me just stop this slide. No, let me just share the second one slide. Mm,
वेट अ मिनिट. हां. येस. हां, हां. हां, बघा आता हे तुमचं न्यूक्लियस आहे. एक थोडंसं मी झूम करते हां. हे बघा. हे तुमचं न्यूक्लियस आहे आणि हे न्यूक्लियस जेव्हा हे न्यूक्लियस म्हणजे एक मिनिट तुम्हाला दिसणार नाही ना स्लाइडमध्ये. अरे रे रे! देखिए अरे सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ये ज़ूम होता है डायरेक्टली. हाँ, सो अब ये जो कुछ भी हमारा न्यूक्लियस है सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक न्यूक्लियस लिया है जिसकी पहले एनर्जी लेवल ये थी. अब उस एनर्जी मतलब जिसका कि आई वैल्यू क्या डीजेनरेटेड लेवल में थे वो लोग मतलब कि डीजेनरेसी मतलब विद द सेम एनर्जी लेवल वो न्यूक्लियस था. अब वो डीजेनरेसी रिमूव हो जाएगी जब वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएंगे. अब ये जो कुछ भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपकी ये जो आई वैल्यू है वो आई वैल्यू इज इक्वल टू हाफ. ये आई वैल्यूज कैसे आते हैं क्या आते हैं ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे बट हमारे नेक्स्ट क्लास में. बट उससे पहले बात आती है हमारा ये जो कुछ भी न्यूक्लियस होगा अगर से वो अलाइन होता है. अच्छे से सुनो बेटा. अगर से वो अलाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यावर align with the external magnetic field म्हणजे मॅग्नेट ह्या अलाइनमेंटला आपण अलाइनमेंट म्हणतो विथ द मॅग्नेटिक फील्ड. आणि ही जी काही अलाइनमेंट असते ही अलाइनमेंट तुमची जी काही एनर्जी आहे तुमच्या न्यूक्लियसची ती एनर्जी करतं कमी. लक्षात येतंय का? ही एनर्जी होते कमी ज्याला की आपण आणि दुसरी लेवल आहे जी की अपोज करते. काय करते बेटा? अपोज करते तुमच्या आलेल्या मॅग्नेटिक फील्डला. म्हणजेच काय हो म्हणजेच तुमचं हे बार मॅग्नेट आहे. फॉर एक्झाम्पल वरती इकडे साऊथ असेल इकडे नॉर्थ असेल आणि आता इन द प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जर काय इन द प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जर तुम्हाला तुमचा नॉट जो काही जेव्हा ही एक्सेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागते आय मीन टू से मॅग्नेटिक फील्ड लागते ती मॅग्नेटिक फील्ड जेवढी तुम्ही टाकत असता फॉर दॅट पर्पज तुम्हाला NMR मध्ये जो काही सोर्स असतो दॅट सोर्स इज अबाउट रेडिओ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे जास्त एनर्जीची गरज नसते परंतु स्पेसिफिक टाईप ऑफ एनर्जी यू शुड हॅव टू प्रोव्हाइड देम. आणि मग ती एनर्जी दिल्यानंतर हे जे काही तुमचा नॉर्थ पोल म्हणजे की एक मिनिट whatever your this north pole is there this north pole this one north pole will came towards north side and south pole will came towards the south. And as I told you just now north will repel each other and south will repel each other. At that time मला सांगा त्यांची एनर्जी लेवल वाढेल की कमी होईल? ऑब्व्हियसली त्यांची एनर्जी लेवल ही वाढेल. अँड दॅट and for this purpose किंवा because of this purpose ही जी काही तुमची एनर्जी आहे ही एनर्जी इज इन एक्साइटेड स्टेट अँड सॉरी एक्साइटेड म्हणता येत नाही हायर एनर्जी आहे. वेर ॲज ही जी आहे ती विथ द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड ती अलाइन होते म्हणून त्याचं जे काही डिजेनरसी असते ती रिमूव्ह होत असते आणि तुम्हाला असे दोन वेगवेगळे स्पिन मिळतात ज्याच्यात की आपण म्हणू शकतो एकाची कमी एनर्जी होते ती खालती जाते आणि जास्त जी एनर्जी असते ती वरती जाते. And likewise this you can cause this spin state as beta and whose spin is negative and the first one spin was there which is known as plus half spin. आता हे सगळं मी इन जनरल बोललेली आहे. तुम्हाला या डायग्राम मध्ये तुम्हाला जरी समजा समजलं नसेल तरी काही एक प्रॉब्लेम नाही. पण आता तुम्ही मला म्हणाल मॅम अगर से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर से मतलब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है मतलब कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं. तो वो ओरिएंटेशन पॉसिबल ओरिएंटेशन कभी भी कैलकुलेट करने के लिए पॉसिबल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है. अब यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को बातों बातों में मैग्नेटिक और रेजोनेंस का जो कुछ भी मतलब मीनिंग है वो अब मेरी क्लास की मतलब मेरे टॉपिक की
NMR की हेडिंग कंप्लीटली कंप्लीट हो चुकी है एक्सप्लेन करना. व्हाट इज दैट? N मतलब न्यूक्लियस, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, रेजोना मतलब जो कुछ भी आप रेडियो वेव्स डालोगे, एक आध सैंपल जब आप एनालिसिस के लिए देते हो, तब वो जो कुछ भी सैंपल है, वो सैंपल एनालिसिस के लिए देने के बाद में उस सैंपल को जितनी एनर्जी लगनी चाहिए उतनी एनर्जी अगर से आप प्रोवाइड करते हो तो ही आप लोगों को वो स्पेक्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो. Yes, ma'am. सगळं क्लिअर झालं? हे ऑलरेडी क्लिअर होतं की नव्हतं? आता क्लिअर झालं. झालं. ओके. बाकीचे झोपलेत का? Now, chalo, come to the point. Whenever you have an external magnetic field at that time, as I asked you, or as I was discussing with you, and what it is about external magnetic field. जब कभी भी आप अप्लाई करोगे तब आपको कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन मतलब मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्लाइड में 2i+1. 2i+1. What does it mean? It means if you have I की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, तो आपको पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने मिल सकते हैं? 2i+1. इस फॉर्मूले में रख दो. चलो करके दिखाती हूँ. 2 × I की वैल्यू 1+1 मतलब कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन आपको मिल सकते हैं? तो वहां पर 2 × 1, 2 1 जा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. मतलब आपको कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन मिल सकते हैं इस आपकी क्या बोल सकते हैं फॉर वैल्यू आई, तो 3. अब देखिए आप लोग बोलोगे मैम बट हियर वी हैव द 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस फॉर हाइड्रोजन, हाउ इट इज सो? Why did you took that I value is equals to 1? I took it just for an example, guys, and now I'm coming to the actual example which is right in front of you, and that is nothing but the hydrogen. And what is that? Hydrogen is having its spin quantum number value, or that you can explain as in the terms of its I value, that is how much? Half. How much it is? Half. मग ती प्लस असू द्या किंवा मायनस असू द्या, काय प्रॉब्लेम नाही. ती प्लस किंवा मायनस आहे किंवा त्याचे किती पॉसिबल ओरिएंटेशन आहेत ते तुम्हाला काढून दाखवते. दॅट इज 2i+1, अँड 2 × I म्हणजे half 1. If you make these calculations, then you got simply 2 2 2 will get cancel out, and 1+1 will give you 2, and 1+1 will give you 2. म्हणजेच तुमच्या लक्षात येतंय का हो? दोन जे काही तुमचे हे इथे मी दाखवले स्लाइड मध्ये, लक्षात येते का? I इज इक्वल हाफ जेव्हा आपण ठेवतो तेव्हा 2 पॉसिबल हाफचं खाली जातं आणि मायनस हाफचं वरती जातं. जेव्हा की हे वरती खालती जातं, म्हणजेच when you have these spin states which is equals to I, that is equals to half. जेव्हा ते प्लस हाफ असतं तेव्हा ते एक्सप्लेन करतं तुम्हाला अल्फा, आणि जेव्हा ते मायनस हाफ असतं तेव्हा ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतं बीटा. अल्फा आणि बीटा हे रिप्रेझेंटेशन मेथड आहे तुमच्या इन प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये तुमच्या हायड्रोजन साठी झालं. हे लक्षात आलं का? लक्षात आलं का? येस और नो? Now, whenever you have this spinning nucleus at that time, हा spinning जो न्यूक्लियस आहे ना, या न्यूक्लियसचा आता जो काही स्पिन करत असताना त्याचा जो स्पिनिंग ऍक्सिस आहे ना, हा स्पिनिंग ऍक्सिस म्हणजे त्याची जी काही डायरेक्शन आहे, या डायरेक्शननी तो मूव्ह होतोय. आणि तो मूव्ह होत असताना कसा मूव्ह होणार बेटा? कम्प्लिटली सर्क्युलर नेचर मध्ये तो मूव्ह होत असतो. आणि तो मूव्ह होत असणार ना, त्याला जे काही आपण म्हणतो, जेव्हा तो ऑर्बिट मध्ये एका स्पिनिंग न्यूक्लियस जो आहे हा तुमचा, तो त्याच्या ऑर्बिट मध्ये जेव्हा मूव्ह होत असतो, हे सगळं काही आता इलेक्ट्रॉन बद्दल नाहीये, नीट लक्षात घ्या. दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटॉन न्यूट्रॉन जेव्हा ते न्यूक्लियस मध्ये असतात त्याबद्दल. आणि यालाच आपण म्हणतो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी, दी NMR and or NQR or PMR. And now when you have this at that time, हे तो जेव्हा असा फिरत असतो तेव्हा त्याला आपण म्हणतो प्रिसेशनल ऑर्बिट. हे काय आहे? ज्या एका स्पेसिफिक सर्क्युलर मोशन मध्ये तो फिरत असतो त्याला आपण म्हणतो प्रिसेशनल ऑर्बिट. आणि जेव्हा तो फिरत असतो तेव्हा
ज्या फ्रिक्वेन्सीने तो फिरतो ते किंवा फ्रिक्वेन्सी जी काही असते त्याची त्याला प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी आपण म्हणतो. जी प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला फार इम्पॉर्टंट आहे रेझोनन्स मध्ये. आता मला सांगा तुम्हाला इथपर्यंत समजलंय का? हे जर समजलं असेल तर मला आज गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. येस मॅम, समजलं. ओके. अरे हा नाही, नाऊ I would like to take a whiteboard. Yes. आता तुम्ही म्हणाल मॅम तुम्ही खूप बडबड केली आज. खूप काय काय सांगितलं. थोडं समजलं, थोडं नाही समजलं. काय 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 माहित नाही. तर हे सगळं तुम्हाला तुमच्या माइंडमध्ये स्टोअर होण्यासाठी पार्ट 1, पार्ट 2 आणि पार्ट 3 जे काही 3 पार्ट्स आपले झालेले आहेत ते 3 पार्ट्स मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग देईन. त्या 3 पार्ट्सची रेकॉर्डिंग तुम्हाला उद्याला कंप्लीट पाहायची आहे. मग ती तुम्ही किती स्पीडनी बघा, कशी बघा, पण क्लिअर झालं पाहिजे माझ्या नेक्स्ट क्लास पूर्वी, जो की मी सॅटर्डेला घेणार आहे. उद्याला मी क्लास ह्याच्यासाठी नाही घेणार किंवा मी एखादी अजून रेकॉर्डिंग करून तुम्हाला सेंड करेन. पण हे का मी तुम्हाला 1 दिवसाचा वेळ देते, कारण की सगळं बेसिक आत्ताच्या आत्ता क्लिअर झालं पाहिजे. ओके, सो कम टू द पॉइंट. जैसे कि अब हमने पढ़ा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. अब इस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में आप लोगों को देखिए, अब यहाँ पर बात आती है अप फील्ड की और डाउन फील्ड की. मतलब आपके ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो कुछ भी न्यूक्लियस होते हैं, इनके जो आई वॅल्यूज होते दॅट कुड बी प्लस मायनस और प्लस मायनस तर असतातच, पण त्याच्यामध्ये मला अजून एक गोष्ट सांगायची जी आहे दॅट कुड बी fractional also. And I values for your nucleus, it could not be only and only two values. It can be many more for which is depending on to the type of your nucleus. मग तुम्ही म्हणाल मॅम ओके आम्हाला न्यूक्लियर NMR चं बेसिक प्रिन्सिपल तुम्ही सांगितलं म्हणता इथपर्यंत कळलं आम्हाला, पण याचं इतकं अवघड आहे का NMR? येस बेटा, NMR काही छाटछूट नाहीये. NMR चे वाईड रेंज ऍप्लिकेशन्स आहेत, पण त्याला आपण सोपं करण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि हे जे काही तुमचा NMR आहे, हा NMR शिकत असताना NMR मध्ये जे काही तुमचा मॅग्नेटिक मोमेंट आहे, तो मॅग्नेटिक मोमेंट इट मीन्स हे जे काही तुमचं NMR चा प्रिन्सिपल आहे, तो त्याच्या मॅग्नेटिक मोमेंट वरती म्हणजेच की ह्याच्यात कम्प्लिटली स्पिनिंग वरती डिपेंडेंट आहे. किती स्पिनिंग आहे. आणि जर समजा तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्या, आज NMR चा जो प्रिन्सिपल सांगते मी, हाऊ कॅन बी or which nucleuses can be NMR active and which type of nucleuses can be NMR inactive. For this clarification, you must have to attend my next class or my next part of your NMR classes, and that will be on that will be very soon. But before that, you must have to clarify with the thing which I'm telling you. That is, हे जे काही आपण काल ॲटम काढला होता अँड दॅट ॲटम वॉज हॅव्हिंग वन इलेक्ट्रॉन, देन द सेकंड वन इलेक्ट्रॉन, देन द थर्ड वन इलेक्ट्रॉन, एंड ये जो कुछ भी अब आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रो मतलब विथ देयर स्पिन. अब आप लोग मुझे बोलोगे मैम ये कितनी बार डायग्राम निकाल रहे हो आप, क्यों निकाल रहे हो मैम? बोलती हूँ बेटा, वेट अ मिनट. अब जब कभी भी आप ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एट दैट टाइम, इफ यू आर प्लेसिंग देम इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर से वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एट दैट टाइम ऑब्वियसली जब कभी भी वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होंगे, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तब उसका जो कुछ भी उस पर क्या बोलते हैं मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है, दैट कुड बी लाइक फॉर एग्जाम्पल यस यन. एंड अब देखिए ये कैसा है, थोड़ा सा अच्छा सा पेन यूज करती हूँ so that you should not get confused. हा कसा फिरतोय? Clockwise. And how this is moving? Anti-clockwise. When it is moving
clockwise and the anti-clockwise, at that time what happens? At that time specifically when it is moving clockwise and when it is moving anti-clockwise, at that time तुम्ही जेव्हा त्याला त्याला एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आणणार, at that time they have their external magnetic fields, and external magnetic field मध्ये आल्यानंतर त्यांच्यावर तरी मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस होतं, and that magnetism can show you, you can show it like for example in काय म्हणतो, नॉर्थ पोल इथे असेल तर साऊथ पोल इथे असेल. आता हा याच्या अपोजिट हा आहे म्हणजे मला सांगा याला कुठला पोल येणार इथे? ऑब्व्हियसली द साऊथ पोल विल बी, साउथ पोल विल बी हियर साइड अँड नॉर्थ पोल विल बी हियर साइड. का रे? कारण की त्यांची जी काही, क्योंकि उन लोगों की जो कुछ भी अब मैग्नेटिक मतलब वो जब कभी भी घूम रहे तो उनमें जो कुछ भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिज्म मतलब स्पिनिंग जो हो रही है मैग्नेटिज्म में अपोजिट अट्रैक्ट्स, एंड दैट इज व्हाई वो स्पिन न्यू जब वो एन यहाँ पर होगा तब एस यहाँ पर होगा, और एन जहां पर डाउन साइड में होगा तो यस डाउन साइड में ऐसे होगा. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स दैट न्यूक्लियसेस कैन कैंसल देयर, नीट ऐका, दे कॅन कॅन्सल देअर मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे ते त्यांची जी काही स्पिनिंग असते ती स्पिनिंग. म्हणूनच तर तुमचे हे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते छानपैकी क्लॉकवाईज एक आणि अँटी क्लॉकवाईज त्यांची स्पिन कॅन्सल करून, म्हणजेच की प्लस हाफ आणि मायनस हाफ स्पिन कॅन्सल करून ते इझिली मूव्ह होऊ शकतात. आणि लाईक द सेम application we are applying here, and likewise this here we are finished with our basic principle of NMR spectroscopy. Is that clear to everyone? Yes, guys. Yes, ma'am.